The world of audio content can cover music, jingle, podcast, and so much more. But the basis of any engaging oral production is storytelling. So we have Pooja Barry, head of programming at Fever FM UP, one of the best stations in the country. She will use her long experience developing audio programs that click and figure out which one has an excellent story. She will teach us about good audio storytelling. Apart from being the head of programming at Fever FM UP, Pooja is also a podcaster and a content creator and storyteller. So, Pooja, the stage is yours. Uh, all the best. So again, I would like to thank you for the fabulous introduction that you gave for me, and I'm very happy to see this enthusiastic audience which is here, and the interaction that we are going to have. So, जो अगला आधा घंटा है उसमें हम एक कहानी की तरह से कुछ कहानियों की बात करेंगे. We will narrate a story, we will discuss a story, and we will create a story by the end of this session, hopefully. So, the topic is how to become an audio storyteller. So, storytelling is something I think that fascinates all of us. Whether it is you, me, anyone, all of us want to do one thing, and that is to tell our story. And that is why this format, this medium is gaining so much of popularity. जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें कुछ फिक्शन क्रिएट करना. हमें लगता है यार हमारी लाइफ का ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाएगा. तो वो जो कहानियां हैं जो हर किसी की जिंदगी से निकलती हैं और फिर एक कहानी बनती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि लोग कहानियां सुनते क्यों हैं. व्हाई डू पीपल लिसन टू स्टोरीज? कुछ लोग सुनते हैं क्योंकि वो उससे इंस्पायर होते हैं. लाइक इफ आई वुड लिसन टू स्टोरी ऑफ समवन हु रियली अचीव्ड अ लॉट, आई वुड गेट इंस्पायर्ड टू क्रिएट समथिंग एंड अचीव समथिंग. देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैड अ वेरी टफ डे, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी डू इज टू give our our imagination a flight. It is entering into a different world. Your imagination is there, and just close your eyes and you are a part of that story. Next slide. हम जब बात करते हैं कि हमने एक स्टोरी क्रिएट की, सो हर स्टोरी चाहे वो फिक्शनल हो चाहे नॉन फिक्शनल हो हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जो स्टोरी है ना, वो आपकी लाइफ से निकल के आती है. अगर आपने वो स्टोरी बनाई है, आपने या तो वो खुद एक्सपीरियंस किया है, किसी और से सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने आपके दिल के तार को छुआ है और वो उसके बाद एक स्टोरी का शेप लेती है. एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोरीज आप क्रिएट करते हैं ये आपकी ऑडियो डिजिटल डायरीज हैं. We all know we used to love writing diaries. I know that has become a thing of the past. Now you get an opportunity to create audio diaries, digital diaries, which are always going to be there. जब आप बड़े हो जाएंगे, मतलब you will have kids, you will have grandkids, and then they will come back and listen to these stories, and they will be so proud of you. They will at least connect with your struggle or your state of mind at that time. So what do we want to do with stories? We want to create us a memory. और जैसे कहते हैं ना, हर कहानी की एक स्टोरी होती है. जो मैं अभी पहले भी कह रही थी कि वो स्टोरी आप क्यों क्रिएट करना चाहते हैं. सो दैट स्टोरी हैज अ स्टोरी. और आपकी कहानी की कहानी क्या है, आज हम ये भी डिस्कस करेंगे. सो जब कहानियों की बात होती है, सो all of us are very 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 different individuals. जो मुझे अच्छा लगता है, like I can see Rahul is there, I'm sure he may think differently. So there is a student from Bangalore, he thinks differently. अगर he would like to listen to a story or podcast में, या फिर एक mood, romance is what they like to listen to. Horror is a mood that they think that okay, this is going to totally relax me or unwind me. There is emotional stories, sad stories, happy stories. So there are different kind of moods that we all experience in these stories, and that is why our stories need to match our mood. That is why we pick and choose the stories we want to hear or we want to create. तो देखिए, स्टोरी आपने कोई भी सुनी हो, आपने एक लव स्टोरी सुनी हो, आपने एक सैड सी स्टोरी सुनी, एक हैप्पी स्टोरी सुनी हो, लेकिन उस स्टोरी का जो इंटरप्रिटेशन होता है, जैसे
आपने उस स्टोरी को इंटरप्रेट किया है, दैट इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दैट स्टोरी. आज अगर एक स्टोरी मैंने सुनी एंड आई एम गोइंग थ्रू अ टफ फेज इफ सपोजिटली, एंड this is a story which is very inspiring, that the protagonist there is really going through a tough phase, I will definitely connect with that person and I will think यार ये मेरी कहानी है या मैं इससे कनेक्ट करती हूँ. सो जो मेरा इंटरप्रिटेशन है उस स्टोरी का, वो मेरा हीरो है. सो हर इंसान हर कहानी को एक डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करता है. जो क्रिएटर है उसने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट की, और जो सुन रहा है वो उसको बिल्कुल अलग तरीके से लेके जाता है. आई होप आई एम करेक्ट देयर. So we move to the next slide. Like I was saying earlier also, that there is a method to madness. So when we talk about this, when we want to create a story, okay, repeat. हाँ, शुरू ही कर रहे हैं अभी. अपेक्षा, we are just starting. So we will repeat it again, or repeat this again. So we'll talk about the 4 C's of content. The first is creativity. Or when you're wanting to create something, you know, there will be an idea which will come to your mind कि आज मैं इस पे कहानी बनाती हूँ. लेकिन मेरी जो कहानी है, क्या उसमें कनेक्ट है? क्या वो कहानी ऐसी है कि ये केवल मेरे काम आनी है, मुझे समझ में आएगी? क्या मैं कहानी अपने लिए बना रही हूँ, या मैं ये कहानी लोगों से कनेक्ट करने के लिए बना रही हूँ? So the moment the answer is that you're trying to connect with an audience, the connect becomes the second very important C in your entire game plan. Okay, and then comes clarity. Suddenly the story is running forward and backward, and there is, like, you know, there is a lot of confusion that is happening. That confusion which is on in your mind with that story is visible with your words. The moment your story is clear, जहां हमने वो जो तार बुने हैं वो क्लियर हो गए, लोगों के हमें खुद समझ में आ रहा है, क्योंकि द स्टोरी हैज अ पैटर्न. जहां हमें समझ में आया, लोगों को समझ में आएगा, वो क्लैरिटी हमने फॉर्म कर लिया. देन you reach to the fourth and the very important C, which is consistency. हमने एक स्टोरी क्रिएट की और हमें लगा वाओ, वी हैव डन समथिंग रियली बिग, यू हैव अचीव्ड समथिंग. एवरी स्टोरी इज एन अचीवमेंट. प्लीज थिंक इट लाइक दैट, बिकॉज कहानी बनाना, सुनना बहुत आसान होता है, लेकिन बनाना बिल्कुल आसान नहीं है. और अगर आप ये कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली अ पैट ऑन योर बैक. बट क्या एक कहानी के बाद हम रुक गए? क्या हमने अपनी इमेजिनेशन को वहीं पे रोक दिया? That is not what we have to do. The fourth and the most important C is consistency. Because क्या होता है ना, it should not be just a spark that happened. It needs to be consistent. You need to come back, create something new, something different, and give your audience that same experience again. You could choose a different genre. अगर आपको लग रहा है कि okay, I have chosen romance as a mood, I want to pick horror, so that is completely up to you. But you have to be consistent in creating, because जैसे जैसे आप क्रिएट करते जाएंगे, आपका कनेक्ट बेटर होगा. जब कनेक्ट बेटर होगा तो आपको खुद की क्लैरिटी आएगी, और फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी इज समथिंग नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अचीव. आई कैन सी Shubhang said that it's very difficult. Consistency is a tough game. Absolutely, it is. But if you keep repeating the process, then this is going to get a lot easier. That's what I feel. So we'll move on the next slide. ये तो 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि असली बाजीगर कौन है, आपको क्या लगता है इन चारों में से which is like the real बाजीगर? So let's have a few votes here. नहीं, वो तो शाहरुख खान तो है ही है, वो तो बॉलीवुड का बाजीगर है. अगर हम स्टोरी टेलिंग का बाजीगर पूछे इन चारों सीज में से, तो ओके, कंसिस्टेंसी, क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी. ओ, आई कैन सी what is bazigar. But Shahrukh Khan. Who is bazigar? I know. What is bazigar? I don't know. Okay, so I can see a lot of votes coming for consistency and connect. Okay, all 4. Okay, now when we talk about genres, which are those genres that you can cover while you are creating a story? जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, कहानियों की बात करते हैं, तो कई ऐसे जॉनर्स हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. लेकिन ये कुछ फॉर्मेटेड जॉनर्स हैं, जैसे कॉमेडी हो गया,
ड्रामा हो गया, वॉर, हॉरर, देर आर सो मेनी ऑफ देम दैट यू कैन पिक, म्यूजिकल, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस. बट जॉनर आपको ये सोच के नहीं पिक करना चाहिए कि वो कौन सा है जो लोग पसंद करेंगे. जब भी आपको एक जॉनर पिक करना है अपनी कहानी के लिए, तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात करी कनेक्ट की, विच इज दैट जॉनर दैट यू आर कनेक्टिंग विद. डेफिनेटली इट कैन बी अ जॉनर, व्हाई नॉट. अगर आप पोइट्री के माध्यम से अपनी एक स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. बट आई एम ओनली सेइंग, नजम, दैट दैट नीड्स टू हैव ऑल फोर सीज. सो आपके हिसाब से वो जो पोइट्री है कहानी सुना रही है, लेकिन क्या लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या लोगों को क्लैरिटी मिल रही है उससे? दैट इज द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. Fantasy is a genre that everyone would love, but if you think that that fantasy that you're creating is a fantasy that you would live alone or people can live with you, definitely that can be your genre of creativity. Why not? So these are few genres that we have here, but I would strongly recommend that जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको लगता है आपकी कहानी फिट बैठती है, जिसमें उसका क्रक्स है, सोल है, that is a genre that you think I will pick. Then we move on the next slide. कुर्सियां भी लगा दीजिए शर्मा जी, ये चाय और पकौड़े यही ठंडे करने हैं क्या? मानसून के दिनों में सुदीप जी का ये रोमांटिक अंदाज, निशा जी के हाथ में गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का स्वाद, और बैल्कनी में बैठे हुए ये दोनों एक साथ, ये सब कुछ आज निशा जी को बहुत याद आ रहा था. शादी को 30 साल हो गए थे और हर साल मानसून में कपल बारिश का मौसम इसी तरह एंजॉय करता. आज सुबह से ही बादल गरज रहे थे और 11 बजे तक तो बादलों ने अपनी बाहें फैला दी और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश. 1 साल हो गया था निशा जी को किचन में गए हुए, मगर आज So what we are trying to do in this story, this is a clipping of a small, it's a clipping of a story, बूंदों से बातें. ये एक पॉडकास्ट है, ऑडियो पॉडकास्ट है, जो आप सुन सकते हैं एचटी स्मार्टकास्ट पर. So what we have discovered that apart from radio, we can also create stuff for podcasts so that we increase the shelf life, जिसका हम आगे भी discussion करेंगे. But this is a story about, like I was telling you earlier, about a couple who've spent so many years together, and there is a phase, and every monsoon, जो पहली बारिश होती है, दोनों बैठते हैं अपनी बालकनी में, 2 कुर्सियां लगाते हैं, निशा जी बढ़िया से पकौड़े तलती हैं, चाय बनाती हैं अदरक वाली, और दोनों साथ में बैठ के वो पहली बारिश एंजॉय करते हैं. And there is a phase where Nisha ji is no more, but that memory is there. अकेले नहीं है वो, तभी भी उनकी वो मेमोरी, उन्होंने तभी भी 2 कुर्सियां लगाई और वो उनके बगल में शायद फिजिकली नहीं बैठी हैं, लेकिन उनका जो थॉट है वो वहीं पर है और वो उनके साथ उस बारिश को एंजॉय कर रही हैं. दैट इज बूंदों से बातें फॉर यू. दैट इज व्हाट नॉस्टैल्जिया कैन डू फॉर यू. यू मे नॉट हैव एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर, बट यू कैन जस्ट कनेक्ट विद दिस पर्सन्स इमोशन कि उसको उस वक्त कैसा लग रहा होगा. एंड जैसे ही ये आता है एच टी स्मार्टकास्ट, एब्सोल्युटली आप इसको एच टी स्मार्टकास्ट पर सुन सकते हैं. ऐसी कई कहानियां हैं जो आप एच टी स्मार्टकास्ट पर सुन सकते हैं बूंदों से बातें में, डिफरेंट स्टोरीज विच आर देयर. So this is what we are trying to tell you here, that a story can be anything, but what you take out of that story is what the story means to you. It means different to different people. So मेरी वाली stories that spark nostalgia. So I would like to generally ask people, ये story आपको किसी की याद दिलाती है, या क्या इसको सुन के ऐसा लगा कोई nostalgia आपका trigger हुआ? If someone in the audience would like to say. Okay, Shubham, Dave, yes. Okay. So, thank you. अगर हाँ है तो आपको मैं बताऊं, so this story has achieved what it was supposed to achieve. ये अगर कहीं ना कहीं आपके जहन में लिंगर करेगी, कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाएगी खत्म होने के बाद भी, तो उस स्टोरी ने, उस पॉडकास्ट ने वो अचीव कर लिया है जो वो चाहता था, आपके जहन में छोटी सी स्पेस पाना. We can move to the next slide. अब होता क्या है कि जब हम लोग सोचते हैं कि हमें
कुछ अचीव करना है, कहानियां बनानी है, आई थिंक वी ऑल think that we can create stories, and I don't think it's wrong, because all of us have so many stories within us. It can be something that has happened with us, it's something fictional, it's something that you imagine, fantasy, like someone was saying earlier. So वो कहानी आपने बनाई या आप बनाना चाहते हैं, सो क्या मीडियम्स हो सकते हैं? जैसे मैं अगर बात करूँ रेडियो की एज अ मीडियम, सो लाइक वी आर विद फीवर एफएम, हम लोग ये चीज़ें, ये कहानियाँ, ये एक्सपीरियंसेस रेडियो पे शेयर करते हैं, और जो हमारे लिसनर्स हैं जो रेडियो ट्यून इन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई आपको सुन रहा है ना, सो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज वॉट दिस पर्सन इज गिविंग मी इज कंप्लीटली प्राइसलेस. इट इज दैट पर्सन's टाइम, and I cannot repay in any other way other than I give you value for your time. आपने जो मुझे अपने 3 मिनट दिए और आपको लगेंगे यार ये मैंने सही स्पेंड किए. So radio is one medium, and then when we move to websites, so HT Health Shots is one website where we have amazing podcasts happening on health and wellness. So in fact, we do a podcast with HT Health Shots also, which is called Healthy Zindagi, and we talk about how you can be healthy, how, and not about your physical health. We are focusing on your mental health, your wellness, which is important for us. And every time, हमें ऐसा लगता है कि हम फिजिकल हेल्थ को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बट आवर वेलनेस, आवर मेंटल हेल्थ इज equally important, if not more. I think that is the most ignored thing that we think of today. So we have a lot of such good podcasts on hthealthshots.com, which is the website where you can also share your content. And then we move to HT Smartcast. So मुझे ऐसा लगता है ये जो मीडियम है ना, ये बहुत फैसिनेटिंग है. Why I'm saying this is because जो आपने कंटेंट क्रिएट किया है, ये इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ाता है. जब मैं पॉडकास्टिंग की बात करती हूँ, आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, और साथ ही साथ आप कई प्लेटफॉर्म्स पे इमिजिएटली आ जाते हैं जब आप HT स्मार्टकास्ट पे अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, एंड दैट इंक्रीजेस द शेल्फ लाइफ ऑफ योर कंटेंट. और ये जो है, इसकी जो रीच है, जो आप कहना चाहते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं. So these are 3 mediums that we have here. So we can have dramas, there are audio dramas which we create in podcasts. फिर हम अगर जेंडर स्पेसिफिक बात करें तो ब्रेकिंग ब्यूटी स्टीरियोटाइप्स है, जो आपको हेल्थ शॉर्ट्स पर भी मिलता है, जिसमें हम ये जो स्टीरियोटाइप्ड हो गया है, जो आई नो आपको लगेगा कि नहीं केवल फीमेल या females are not only stereotypes, so are men. But right now I'm thinking that our country is really facing this when it comes to females. So we are really breaking those stereotypes. We are telling you exactly what a woman of today is feeling and what is important to share, to vocalize. So that is also something that you will find there. So the brands are HT Health Shots, where you can share your website, and then HT Smartcast, where you can share your podcast. Great team which can help you create podcasts as well. And radio is definitely there. An age-old medium which will always be there. Fever FM. Then we move to the next slide. So audios हम play कर लें क्या? देखिए, जैसा आपने बताया, मैंने 2 लूम जब अपने घर पे लगा के लो वीवर के साथ इस धंधे की शुरुआत की, तो माताजी, पिताजी, परिवार के सारे लोग बोले कि ये तो सारे लोग अछूत जाति के हैं, they all are the untouchables. तो हम इनको घर पे नहीं आने देंगे. फिर धीरे धीरे जो मोहल्ले वाले लोग थे वो बोले हम इनको मोहल्ले में नहीं आने देंगे. और फिर जब मैं किसी पार्टी में जाता, किसी फंक्शन में जाता, गैदरिंग में जाता, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे. आपका हाथ मिलाने से इनकार? हाँ. कि आप They तो refuse to shake your hands. That's unbelievable. Yes. तो बोले कि आप तो अनटचेबल लोगों के साथ काम करते हैं. सो एक फॉर्मेट, हम लोग पहले एक फॉर्मेट की बात करते हैं. सो जब आप पॉडकास्ट करने का प्लान करते हैं, सो अपार्ट फ्रॉम स्टोरी टेलिंग, जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले हेल्थ शॉर्ट्स की हेल्दी जिंदगी की बात कर रही थी, उसमें व्हाट वी डू इज वी हैव एक्सपर्ट्स कमिंग ऑन बोर्ड. सो अगर मुझे लगता है कि मैं किसी सीरियस चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, डेफिनेटली व्हाट आई फील is very, very important, and I will put it out there through my podcast. But if I have an expert opinion attached with it, so that makes my podcast a little more authentic and will help people to understand the technicalities of it also. So one interview is one format that we can have, and then there is monologue. Order to Romania on Friday.
Alternative land routes are being chalked out as Ukraine airspace remains closed. सो जब हम मोनोलॉग की बात करते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स अपना पॉइंट जो रख रहे हैं जस्ट वन नरेशन दैट इज अ मोनोलॉग फॉर्मेट. अगर आपको लगता है कि आप उसी में कंफर्टेबल हैं और आप उसी तरीके से उसको आगे ले जाना चाहते हैं देन यू शुड प्लीज गो फॉर दैट. आता है C for consent, which means permission for something to happen or agreement to do something. Now, it's an essential part of any relationship, especially intimate ones. Now, people are generally afraid of the term consent and they dismiss it, saying that it leaves no space for romance or adventure. पर ये गलत है. In fact, in the dating space these days, consent is the new sexy. और मैं आपको ये बताता हूँ. सो ये जो नॉन फिक्शनल फॉर्मेट होता है ना नरेशन फॉर्मेट तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हम पिक करते हैं. वी पिक अप फ्यू टॉपिक्स which have happened which are real in nature और हम उसके बारे में बात करते हैं. लेकिन एक चीज जो आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए that you should definitely focus on is that you should have the correct content. आपको पूरी चीजें right पता होनी चाहिए. Your fact check should be like really there before you go ahead and talk about it, because look, if this is non-fictional, the facts are available for everyone. So please check your facts before you get into a podcast on that. Conversational format. स्कूल में जा रहे थे तो उनके बैच पर उनके अपने माता पिता ने उनका ब्लड ग्रुप डाल दिया, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कब मिसाइल गिर जाए और कब उनके बच्चों को ब्लड की जरूरत पड़ जाए. तो ये देखिए, दिस इज अ स्टार्क रियलिटी ऑफ वॉर कि हम कहते हैं कि जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं हमारे, जो गरीब होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसमें अफेक्टेड रहते हैं हमेशा किसी भी वॉर में. तो इसमें कोई नई बात नहीं है. और जब उन्होंने मुझे कहा कि वो ऐसा उनके फ्रेंड्स, उनके जो क्लाइंट्स हैं यूक्रेन में वैसा कर रहे हैं, मुझे यहाँ से दिख रहा था कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे. और वो दुबई में उनका बिजनेस है, मतलब वो इतने करीबी हो गए हैं. So when we talk about a conversational format, कई बार क्या होता है ना, अगर हम अपनी बात करें तो कुछ लोगों को लगता है कि जब सामने वाला इंसान और द पर्सन विद यू कैन टेक आउट द बेस्ट दैट इज इन यू, तो कुछ लोग मोनोलॉग में बहुत कंफर्टेबल होते हैं टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. क्यों पीपल नीड दैट, कहते हैं ना कि एक आप हमें हिंट दीजिए या आप हमें हुक दीजिए, बाकी हम बात करेंगे. सो आई थिंक देयर आर फ्यू पीपल हु आर वेरी comfortable in a conversation. So if you think that that format works for you, you should definitely choose that. So you have to decide whether you want it to be an informal format or just plain conversation that will happen and the facts can flow in. So that is also one format that you can pick. पुली और कुर्ता ढूंढने लगी. ये क्या हो रहा है? अरे बाबा, तुम्हारे लिए कुर्ता ढूंढ रही हूँ. क्यों? अंजलि देने के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, ये भी नहीं पता? नहीं पता. वैसे भी मैं अंजलि के लिए नहीं आ रहा. ऑफ कोर्स आ रहे हो. नहीं. मिल गया. ये So this is another format where we do fictional narration, something that you have created, like it could be fantasy, it could be a fiction that you have created. It can be a story about any 2, 3, 4, 5 people that you want to give narration to. So you can have different people giving voices for it, and then you can create an audio drama. You can have a full packaging, full audio show reel in your head, or you can create that. So that is another format that you can go for. And these are all the formats that are available on HT Smartcast as well and on Health Shots. So you can definitely go and experience it there. Then we can move on the next slide. आता है C for consent, which means permission for something to happen. So अब ये तो हो गई, मैंने आपको ढेर सारी बातें बताई स्टोरीज के बारे में, the first C's that were important and how can you trigger nostalgia. So थोड़ा सा ही टाइम बचा. Yes, do we have some time? Can we quickly create a story? Okay. Am I audible? Am I audible?
Okay. Okay. So we will create a quick story. So Kesh, can I have few people? How can we do this? Someone from the audience would like to create a story with me. We'll first pick a genre that we want to move in, mood, and then we'll have some content. So, okay. How can we create a story? So let's pick a mood, I think, which is very okay. You want to pick horror? Okay, let's pick horror. Can we have few more moods that you would want to go in for, or should we close horror then? फिर तो डरावनी कहानी बनानी पड़ेगी हमें. Romantic, once upon a time, crime, romance. प्यार हमेशा जीत जाता है, पता है. Okay. So mystery तो solve करने का time. Let's yes Deepak. Since romance is winning hands down, let's go with romance. Thriller. So romance create करते हैं story, romantic story. So anybody would want to take this forward? कोई story create करना चाहेगा? Let's do the इश्क. बिल्कुल रघु रफ्तार. We'll do the इश्क. So दो characters रखें. Two characters in the story. हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग. अच्छा ठीक है सागर, हैप्पी रखना है या सैड रखना है? हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए. ओके ठीक है. दो कैरेक्टर्स हैं, हैप्पी एंडिंग होनी है. लाइक टू यंग पीपल डिफरेंट सिटीज से आए हैं. एक भोपाल शहर पिक करते हैं. वहां पर आकर वो लोग साथ में काम कर रहे हैं. different companies, different organizations, and they meet for a work meeting. तो उसके आगे anybody wants to add to it? आपने कहा था स्टोरी मैं शुरू कर दूं, खत्म आप करेंगे. I've given you the plot. कोई और है जो स्टोरी कंप्लीट करना चाहेगा? Okay. How about going for platonic love? Absolutely. अपेक्षा तो तुम करो ना ट्राई. अगर आप भोपाल से हो तो फिर दो जगह हैं भोपाल में जहां पे ये लोग काम करते हैं. टू कंपनीज एंड देन दे मीट, दे कनेक्ट द फर्स्ट टाइम दे मीट. ओके गगन, राइट. सो दे मेट फॉर दिस ऑफिशियल थिंगी. कुछ एक ऑफिशियल मीटिंग में मिले और फिर उसके बाद दे कनेक्टेड द वेरी फर्स्ट टाइम. देन दे वेंट ऑन अ कॉफी डेट. यू थिंक भोपाल की झील के पास. नहीं, सैड नहीं करनी है स्टोरी. सबने कहा हैप्पी रखनी है, हैप्पी स्टोरी करेंगे. ओके डोसा डेट. आई थिंक डोसा डेट इज अ बेटर. कॉफी तो हर कोई पीता है, डोसा डेट करते हैं. देन दे अगेन मीट इन द कैंटीन और फिर होती है डिनर डेट. डोसा आफ्टरनून में, डिनर डेट भी हो गई. फिर उसके बाद देन वन ड्यूरिंग देयर ऑफिस. इतनी बार इतना खाना खिलाएंगे तो स्टोरी कब सुनाएंगे? लंच डिनर हम लोग सब कुछ करा रहे हैं. Oh God, now this is getting interesting. कि वो सांबर स्पिल हो जाता है. ये तो बहुत ही सही है. So why don't we do one thing? Yes, is it possible that everyone who's in the audience can just share this bit in it, and then we can probably compile a nice story out of it later, since there are so many things that are coming here. Or if someone can speak. Yes, so Yash has given a nod. If we can just have a few more ideas. तो पहले हम लोग थोड़ा सा और प्लॉट बनाते हैं. दोनों मिले ऑफिशियल मीटिंग पे, उसके बाद दोनों ने एक डोसा लंच डेट करी और उसके बाद उन्होंने इमीडिएट कनेक्ट करा और देन दे मेट फॉर अ डिनर डेट. उसके बाद क्या हुआ? नाम रखते हैं पहले. नाम क्या हुआ? गिव मी टू वेरी नाइस नेम्स. Vasundhara, can we call the girl Vasundhara? The boy? Rohit, Yash, Ananya, Sundar.
Let's create the story. ठीक है, cool Yash, I got it. Let's do that. So please याद रखिएगा, वसुंधरा है लड़की और लड़का है. Okay, we will take Ashwini's name. Ashwini, we are going with Vasu and Shrey. So my characters are called Vasu and Shrey. Okay, and they are working in Bhopal, and now the story is going to get completed via you. Thank you so much. Yash, आगे आगे बढ़े स्निग्धा, स्टोरी तो कंप्लीट हो जाएगी. So, it's time. I think we should end the session also. But एक चीज जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी वो ये है कि जो हमारी लाइफ जैसे चलती है ना, so every day is new for us and our priorities change every day. And with the priorities ना, जो हमारी स्टोरीज हैं या जो उन स्टोरीज का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट है वो भी हर दिन बदलता है. So let's not get fixated with one idea, with one creation that you're doing. There's space for all your creation. There are so many platforms. We are very lucky now that we can share our voice, we can share our digital diary in form of podcasts. So don't stop at one creation, just keep creating and be consistent, and you would see that one day you are thinking of something else which is a priority for you, and next day it will be a whole new day for you. So just let it go, don't get fixated to anything. So I think we end there. Yes. Thank you so much, Pooja and Snigdha. This was an amazing session. Even I was enjoying so much when I got to learn about the various storytelling formats. I was not knowing that there are so many. सुनते वक्त तो लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, but when you go into the creative side of things, there's so many things to look at. So awesome. And I have a great idea that whoever finishes the Vasu and Shrey story and tags Pepper content, complete the story, take your time, complete the story and tag Pepper content, the story on Instagram, Twitter, wherever you are, tag us, and the top 3 favorite stories will get Amazon gift vouchers. So go ahead, you have a great incentive now to create those stories as well. And do tag Pooja over there, tag ST Smartcast, tag our content, and we'll go through all your stories. So thank you Yash, thank you Snigdha, really thanks for being there, and I think it was a great session. I really enjoyed myself, and the audience was so brilliant. Snigdha? I loved it. In fact, are we going to take the Q&As, or like we have like about 15 minutes? There are a few questions that I see here. And one of them says, how many of you believe in the power of storytelling? And I think, Pooja, I think you should take these. There are a lot of questions. Wow. So this power of storytelling is that each one of you was hooked onto this session. This is the power of it. If, like I said, my story is my story. All of us own this, not mine, it is not yours. It's how we take the stories. So it is very powerful. And if you believe that you can create it, then you please create them. Don't stop yourself. ये मैं सोची कि इसको मैं कैसे shape करूँगा? How will I take it forward? So you can, so like we are doing it. Sintha, we do it at Smartcast. Yes, we do. If we want to share. We do. So if you want to share it. So I've that is also one of. Yeah, I've put an email ID there of our producer. She's a wonderful creator. She's a wonderful ideator. deepti.ahuja@fever.fm is her email ID. If you have these wonderful ideas, send it to her. She will vet them. She'll help you. She'll coach you. And you'll be there. In fact, Pooja, the next question also boils down to, once you come to us, what happens? So how does voice tones and modulations create an impact on storytelling, and how do you make it impressive? I think Pooja is a pro at it, and she's the person you can answer. Like, abhi khade khade, Pooja, can you give us a few examples of how you modulate your voice? I think that will be a good example for this question. So I host a daily show also, which is Dear Zindagi, and most of my content that I
take in that show is something that is taken from what has happened in my life, in my day, or something that has happened in my audience, and they think that this is something that should reach to the people. Modulation to hota hi rehta hai aise. It's like it's right there. Like when you're doing Boondo Se Um, Baatein, you sound different. When you're playing a character, you sound different. But when you are yourself because in I Ulti Zindagi, you sound different. So yes, I will think tell you why modulation. that happens. I can and this is not modulation. It is not modulation. It is what you feel during that story. If you really get into the story, you would start sounding like that character. अगर आपने, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे वासु और श्रेय हम create करेंगे, you will have to think what is Vasu thinking, what she should wear when she's going on that first date, Shreya का favorite color क्या होगा, then you start thinking of those things. I think Shreya was very irritated when I asked for that thing twice. ना उसको लगा कि मैं तो कितनी boring हूँ. The moment you start thinking, let's start living the lives of the characters that you're creating, you would start thinking differently and sounding different. Correct, Yash? What do you think? Definitely. Yash, can you take the other two questions? For some odd reason, my scroll bar is not moving. Okay, sure. When we talk about podcast, what do you feel that one thing which connects the most as a speaker? So keep your story as real as possible. So even if you're creating a fantasy, even if you're creating a certain genre, but still that story should be, it should have it should have your imagination, it should cover all of that. But अगर मैं उसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, अगर वो मेरे लिए क्लियर नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैरेक्टर क्या कर रहा है, so the moment I get lost in these intricacies, मैं कहानी का मजा नहीं ले पाऊंगी. So keep it very simple for me. You can create something rocket science in your head, लेकिन जब आप उस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं तो वो मेरे लिए बहुत सिंपल होनी चाहिए. मुझे समझ में आनी चाहिए आपकी कहानी, और दिल से निकलनी चाहिए वो कहानी. Kirti is asking how not to fall in the trap of burnout and being consistent. So burnout कब होता है? जब आपको लगता है कि यू आर इन अ रेस, यू हैव टू क्रिएट समथिंग. नो, मुझे तो चाहे आज मेरा मन है चाहे नहीं है, मुझे थॉट आ रहा है कि नहीं, मुझे बस क्रिएट करना है. ओके, दैट आंसर्स योर फोर्थ. आई नो दैट विल से कि कंसिस्टेंट होना है, बट you have to give that your mind that space to create something. And if that is not happening, there will be days when you would not be able to create. It's not something that we have to do every day. But if you tune yourself in a way that, okay, this is the time when I would be able to create my story, it will happen to you. Or burnout ho raha hai na, to I would suggest just change the genre that you're working on. Just change it. We all want variety. So does your brain. अगर आप same चीज को ही सोचते रहोगे, so probably there will be a burnout. आप change कर दो अपना way of thinking. Just take a different path. हम लोग क्यों हॉलीडेज पे जाते हैं? So that we just change what we are doing on a daily basis. So give a vacation to your thoughts and you will reach there. Awesome. Let's take one last question. Do you think podcast will be the go-to entertainment in the near future? Not in the near future, it's happening now. I really think that the way people are connecting with podcasts is completely amazing. I can get to listen to things. I can connect with people in a different level. It is very, very easy there. Podcasts has made it so very much easy to express what you want to share and also experience what you want to experience. So both expression and experience are happening together for you. So I think podcast is here to stay. It's not near future, it is here to stay. I agree. Yes, thank you. All right. So I think we've come to the end of this amazing masterclass. Thank you, Pooja, so much for your time. Thank you, Snigdha. If you have any questions related to podcasting, please do reach out to Pooja. She's at Pooja Barry on Instagram, and my Instagram handle is yes, it is DZ. So my show is Dear Zindagi. It is DZ_Pooja. That is my handle. DZ_Pooja. Yeah. I've just typed it in the chat. Yes, on Instagram.
And I hope to see you all and connect with everyone. Thank you for being such great audience. You know, you guys are the stars of this session, not me, not Snigdha, not Yash, for making it so interactive. All of you. I'm taking back Gaurav, Rahul, Yash, all of you in my memories. Thank you for making this such a great session. Thank you. And we have more such sessions planned throughout the day. And there are also really cool booths that you can visit. There are a lot of there are a lot of creative businesses, small businesses who have their booths here at the NBC Summit. Do check them out. Do talk to them. I'm sure we'll end up having a great conversation. All right. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thanks, Snigdha. Thanks, Yash. Thank you, everyone.